Dear students, in this topic we shall discuss the mechanism of lung ventilation in reptiles. Dear students, the snakes and lizards and crocodilians have ribs which form a thoracic cage around the lungs, just like mammals. However, in tortoises and turtles, the ribs are fused as a part of the rigid shell. So, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं टर्टल टार्टाइजिस और इसके अलावा कोकोडिलियन स्नेक्स और लिजर्ड्स, इन दोनों में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मुख्तलिफ है. रेप्टाइल्स के पास रिब्स तो होती हैं लेकिन दे डू नॉट पोजेस ए डायफ्रेम. सो ज़ाहरी तौर के ऊपर दोनों में एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटीज एक दूसरे से अलग नहीं है. However, pressure differences between these two regions do exist. That is why there is some indication of functional separation of these two cavities. ये जो difference है functional difference between the two cavities, ये mechanism of breathing में important role play करता है. We shall discuss in detail the breathing mechanism of snakes and crocodiles. First, we are going to discuss inhalation. During inhalation, ribs move posteriorly. They cause the expansion of thoracic cavity. This expansion reduces pressure in lungs. As a result, air draws in passively into the lungs, passing through the open ears and glottis. मैकेनिज्म काफ़ी हद तक मैमल्स के साथ मिलता जुलता है. स्वाय एक बात के डायफ्राम का कोई रोल नहीं है चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करने में. प्रिंसिपली चेस्ट कैविटी इज एक्सपेंडेड, प्रेशर ऑन द लंग्स इज रिड्यूस्ड एंड एयर इज इनहेल्ड. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एयर इज एक्सपेल्ड आउट ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स एंड कंप्रेशन ऑफ थोरेसिक कैविटी. ये जो कंप्रेशन ऑफ थोरेसिक कैविटी है दैट occurs due to forward movement of ribs and body wall. कंप्रेशन के नतीजे में लंग्स के ऊपर प्रेशर में इजाफा होता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि एयर पैसिवली मूव आउट कर जाती है, दैट इज एक्सपायरेशन हो जाती है. नाउ वी शैल डिस्कस द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन टर्टल्स एंड टॉर्टाइजेस. चूंकि टर्टल्स की रिब्स शेल का पार्ट हैं, इसलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी वॉल इज नॉट पॉसिबल. द एक्सेलेशन इन दीज एनिमल्स टेक्स प्लेस by the contraction of abdominal wall muscles which force the viscera or visceral organs upward. जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स हैं इनको थोड़ा सा अपवर्ड पुश किया जाता है. रिजल्ट क्या है कि लंग्स आर कंप्रेस्ड एंड एयर इज एक्सहेल्ड. इसके ऑपोजिट इनहेलेशन उस वक्त होती है जब एब्डोमिनल वॉल के मसल्स इस तरह से कांटेक्ट करते हैं कि दे पुल द viscera down or it creates a negative pressure on the lungs and air is drawn into the lungs.